Dear students, this is our third lecture in the colloids chapter. In first lecture, we had seen about the classification of colloids into different categories depending on either the physical states into 8 different categories or depending on the interaction between the dispersed phase and dispersion medium into two types as the lyophilic colloids and lyophobic colloids. सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि चार्जेस जो होते हैं वो कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर चार्जेस होंगे तो कोलॉइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, चार्जेस नहीं होते हैं तो कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और अगर लायोफोबिक कोलॉइड्स हो तो वो शायद से प्रेसिपिटेट भी कर जाते हैं वहाँ पर। सो चार्जेस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और कितने आते हैं, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज में। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था। नाउ इन थर्ड लेक्चर वी विल सी अबाउट what are the properties of these charges, like zeta potential, and how these charges are developed as a Helmholtz and Stern's models. So we will see it in this lecture about zeta potential, Helmholtz model, and Stern models. So to recap, just the colloids term was introduced by Thomas Graham in 1961. Colloid is a heterogeneous system with two phases, namely the dispersed phase and a dispersion medium. And there are two types mainly of colloids. One is a lyophilic colloids, which are liquid loving colloids. There is a positive strong interaction between dispersed phase and dispersion medium, and also these are stable colloids. दूसरे होते हैं lyophobic colloids. Lyophobic colloids are liquid hating colloids. There is less interaction amongst dispersed phase and dispersion medium, but there is a strong interaction amongst the dispersed phase molecules and amongst the dispersion medium molecules. They interactions are lesser, but intra interactions are quite strong in lyophobic colloids. These are less stable colloids. The colloids electrical charge in the lyophobic as well as lyophilic colloids in an aqueous system is either due to adsorption or due to dissociation of the molecules. Proteins as well as fatty acids, we have seen about the dissociation leads to development of charges in the molecules. Similarly, on others like AgI or ferric oxide colloids, we have seen about the adsorption being the major factor which is responsible for origin of charge on the colloidal particles. Stability of colloids is due to electrostatic repulsion of the like charges. जब चार्जेस आते हैं colloidal particle के सरफेस के ऊपर, तो ये जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस हमारे सेम टाइप के चार्जेस होते हैं, इसलिए एक कोलॉइडल पार्टिकल दूसरे कोलॉइडल पार्टिकल्स के को रिपेल करता है, and that is why this particular charges are being present there. So that is one factor responsible over here. Then the trace quantity of electrolytes stabilizes the sol, while if we add greater quantity of same electrolyte, it will result into precipitation. So this was governed by Hardy-Schulze rule. By Hardy-Schulze rule, how or which type of electrolytes will be responsible for precipitating the colloidal particles. Now, when we are looking at a colloidal particle, let's say this blue colored area is a colloidal particle, which is a spherical one, and on its surface there is a positive layer of positive ions. Layer of positive charged ions being present over here. Sorry, this should be a positively charged colloidal particle. Positively charged colloidal particle where we have a positive layer of positive charges is present into it. This is a fixed layer because these charges are adsorbed on the surface, so they cannot move out into the dispersion medium. So it is a fixed layer is there, and just adjoining to it, just surface से जो interaction होता है dispersion medium का, ये हमारा colloidal particle है, dispersed phase है, इसका interaction होगा dispersion medium में. This is our dispersion medium. So when it reacts with or interacts with dispersion medium, so ये जो dispersion medium है, इसमें भी कुछ charges होंगे, charged particles होंगे जिसके साथ ये interact करेगा. तो ये जब interact करता है charged particles के साथ,
तो वो जो इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो इंटरेक्शंस ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये हमारा लेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज के आयंस हैं उसको वो रिपेल करेगा, और जो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं इनको वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसलिए क्या होगा कि जस्ट अबोव द सरफेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम में हमारे मेजॉरिटी नेगेटिव चार्जेस की लेयर एक बन जाएगी। So we will have a positively charged layer on the surface of colloidal particle and a negatively charged layer on the dispersion medium adjoining to the colloidal particle. So we will have two layers. So that is how this electrical double layer concept is being raised in the colloidal particles. Colloidal particle के surface पे एक charge होगा और उसके just adjoining dispersion medium में उसका opposite charge तैयार होगा, जिसकी वजह से हमारे पास दो लेयर्स बनेंगी। एक लेयर हमारा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, दूसरा लेयर उसका ऑपोजिट चार्ज वहां पे रहेगा। सो दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। दिस थियरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हेल्महोल्ट्ज and later modified by Stern and other scientists. The presence of charge on the surface of the colloidal particle influences the distribution of charges on the surrounding in the dispersion medium. So ये अगर हमारा डिस्पर्स फेज है, दैट इज कोलॉइडल पार्टिकल, उसके सरफेस पे जो चार्जेस है ये इन्फ्लुएंस करेंगे कि डिस्पर्शन मीडियम में कौन से टाइप के चार्जेस आएंगे। यहाँ पे ions of opposite charge are attracted towards the surface leading to formation of a electrical double layer. So ये हमारा सरफेस है पार्टिकल का, उसके ऊपर जस्ट हमारे पास एक लेयर बनेगा एक चार्ज का, और उसके बाद जो है वो डिफ्यूज्ड लेयर होती है जिसमें कि डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स या आयंस आते हैं जाते हैं। सो उनका मूवमेंट होते रहता है, इसलिए ये डिफ्यूजन लेयर होती है या डिफ्यूज्ड लेयर बोलते हैं हम इसे। और ये हमारा फिक्स्ड लेयर होता है चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। दिस शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल। So Helmholtz suggested the formation of electrical double layer at the surface or separation of dispersed phase and dispersion medium. If this is our dispersed phase, that is this is our colloidal particles surface of colloidal particle, then just adjoining to it there will be a second layer, charged layer on the dispersion medium will be there. So we will have an electrical double layer, formation of electrical double layer at the surface of separation of dispersed phase and dispersion medium. इनके जो separation है उसमें एक dispersed phase में एक टाइप के charges होंगे और dispersion medium में दूसरे टाइप के charges आएंगे. The adsorbed ions on the colloidal particle surface and oppositely charged ions in the dispersion medium are fixed. According to Helmholtz model, ये जो charges होते हैं सरफेस के ऊपर ये फिक्स्ड है ही, साथ में ही जो डिस्पर्शन मीडियम के जो चार्जेस है वो भी लेयर फिक्स्ड होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज मॉडल. दिस इज समवॉट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू इमेजिन बिकॉज द डिस्पर्शन मीडियम में थर्मल एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूवमेंट होते रहते हैं, मोशन होता है, इसीलिए हम इसको डिफ्यूज्ड लेयर भी बोलते हैं और इसकी वजह से ये चार्जेस आते जाते रहने चाहिए. बट हेल्महोल्ट्ज इज making it as a fixed layer. It is they are assuming this to be a fixed layer. So this can be analogous to an electrical condenser where we have two charges, plates of different charges, parallel plates separated by a distance say L. Then the potential difference of this double layer between the colloidal particle and the diffusion layer, that is diffusion medium or डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, इन दोनों का जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना है, इस डबल लेयर में जो ऑपोजिटली चार्ज लेयर्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा. और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला बाय हेल्महोल्ट्ज, L into sigma upon epsilon naught into D, where L is the distance of separation between the two layers, that is layer of charges on the colloidal particle and layer of charges on the dispersion medium. इन दोनों का जो separation है, that separation we call it as L and that is measured in terms of meters. And sigma is charge density, that is coulomb per meter
square coulomb per meter square. So here what is the number of charges per square meter of area of the uh, dispersed phase as well of the dispersion medium. So that is our sigma. Epsilon naught is permittivity constant for vacuum with the units of coulomb square per newton per meter square, and d is dielectric constant, that is epsilon upon epsilon naught. So this will be our which is a dimensionless or unitless quantity. So this gives us to the potential difference between the two layers or electrical double layer. As this has a problem of assumption as a fixed layer. Helmholtz had suggested that this dispersion medium में जो layer बनता है वो भी fixed होता है, but actually it is not fixed because of the dispersion medium thermal energies, thermal motions हैं. So Stern modified this Helmholtz model and he proposed a diffused layer model. He proposed a diffused layer model whereby जो सरफेस जो है कोलॉइडल पार्टिकल का जो सरफेस है उसके ऊपर जो चार्जेस है ये चार्जेस स्टर्न ने फिक्स्ड रखे. यहाँ पे ये चार्जेस का लेयर जो है वो फिक्स्ड लेयर है, लेकिन जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें जो चार्जेस का लेयर होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूजन में होता है, क्योंकि यहाँ से जो चार्जेस होते हैं वो थर्मल मोशन की वजह से वापस डिस्पर्शन मीडियम में जाते हैं और इक्वल अमाउंट के दूसरे चार्जेस वापस आ जाते हैं यहाँ पे. सो इसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्टेंट चार्ज ऑन द डिफ्यूज लेयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ a fixed layer. Although there is a interconversion of charges is there, diffusion is there, but still any given time charge on the diffused layer will be equal and opposite to that of the fixed layer. So charges on the colloidal particle surface are fixed, but oppositely charged ions in the dispersion medium are considered to be diffused. The resultant charge of the diffused layer is equal and opposite to that of a fixed layer. The potential difference between the fixed layer and diffused layer is called as zeta potential or electrokinetic potential and is found to be very much same as that of the Helmholtz model. The potential difference given by Helmholtz. Here this is the symbol for zeta potential. We can draw this or we can write this as like this also. This way we can write as a zeta. So this zeta equals L into sigma upon epsilon naught into d, where L is difference between or distance in meters between the fixed layer and the diffused layer. Sigma is charge density on the fixed layer. Epsilon naught is permittivity constant of vacuum and d is the dielectric constant. The difference between Helmholtz model and Stern's model is that Helmholtz model considers this to be a fixed layer and Stern model considers it to be a diffused layer, and this is more towards a practical or experimental observations. The Stern model is more towards a practical observations, while this is a theoretical model, Helmholtz model. So this is what we have with, in this lecture: Helmholtz model, Stern model, and the zeta potentials. Thank you very much.